Namaste friends, I am Vijeta, your yoga coach. Welcome to my channel Pinaki Yoga. First of all, thank you so much for all your comments and your queries. आपके सारे क्वेश्चंस हमें मिलते रहते हैं कमेंट्स के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू. इन केस इफ़ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप हमें मेल भी कर सकते हैं. माई ईमेल ID is pinakiyoga@gmail.com. You can send any question through email. So today's tutorial is regarding eyes refreshing asanas or exercise for eyes. Eyes are very important sense organ out of all 5 senses. Through eyes only हम बहुत सारी information outer world से collect करते हैं और अपने brain को send करते हैं. Eyes के through ही we learn so many things, we understand so many things in life. So let's understand हमारी eyes काम कैसे करती हैं, how it's functioning, how this sense organ functioning. So first of all, in simple language, जब हम नियरेस्ट ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो हमारी आइज़ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हमारा जो लेंस होता है वो थोड़ा थिक हो जाता है और एक इमेज रिफ्लेक्ट होती है रेटिना के ऊपर. देन इट्स सेंड टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ आवर माइंड. दिस इज़ हाउ वी सी द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. इन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये मसल्स अपने आप को नॉर्मलाइज करती हैं, लेंस अपने आप को नॉर्मलाइज करता है एंड वी आर एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. So the major problem we can see today with this sense organ is short-sightedness and long-sightedness, जो बहुत सारे लोगों में कॉमन है, जिसकी वजह से हम स्पेक्स यूज़ करते हैं. जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पास की चीज़ें देखने में और दूर की चीज़ें देखने में. सो यू कैन एक्सपीरियंस short-sightedness which we also called myopia. short-sightedness ज़्यादातर यंग लोगों में देखा गया है या फिर टीनेजर्स में देखा गया है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर स्क्रीन का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लैपटॉप, टेलीविज़न एंड फ़ोन स्क्रीन, जहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज़ ज़्यादा होता है. एंड लॉन्ग साइटेडनेस ज़्यादातर हाइपरमेट्रोपिया हम ओल्ड एज पीपल में, एडल्टरी पीपल में देखते हैं. इन शॉर्ट साइटेडनेस यू आर ओनली एबल टू सी द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट एंड योर लेंस इज़ नॉट एबल टू फोकस ऑन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. अब प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब ये जो शॉर्ट साइटेडनेस है ये हमारा एक कंटिन्यू प्रोसेस हो जाता है. दैट मीन्स ये ज़्यादातर यंग लोगों के अंदर देखा जाता है बिकॉज पीपल हु आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन वॉचिंग द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, इन सीइंग द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, लाइक जो लोग लैपटॉप पर टाइम स्पेंड करते हैं या जो लोग टेलीविज़न पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्टूडेंट्स और टीनेजर्स में ये शॉर्ट साइटेडनेस ज़्यादा देखा जाता है. दैट्स वाई दे यूज़ स्पेक्स. जो लोग मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जिनकी वजह से उनकी जो आइज़ होती है, आइज़ की मसल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड रहती है. दैट्स हाउ आइज़ फॉरगेट अबाउट द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड दे गेट्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड एंड जिसकी वजह से वी कैन एक्सपीरियंस दिस शॉर्ट साइटेडनेस. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन शॉर्ट साइटेडनेस इज़ whenever these muscles getting contracted all of the time, so आपकी जो facial muscles होती हैं, these muscles also get contracted. Your facial muscles, your forehead muscles, your brain muscles also get contracted. जिसकी वजह से you can feel cervical, you can feel headache. कुछ लोगों को यहाँ side में भी pain होता है. Next important thing that you can experience because of short-sightedness is dryness in your eyes. When you are spending more and more time with the nearest objects, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्चुअली यू फॉरगेट टू ब्लिंक योर आइज़ एंड दैट्स वाई वी हैव दिस मॉइस्चर इन आवर आइज़. जो जब भी आप ब्लिंक करते हो तो ये मॉइस्चर एक्चुअली अवेलेबल रहता है हमारी आइज़ में. हमारी आइज़ इस मॉइस्चर को मेंटेन करके रखती हैं. बट व्हेन यू आर कंटिन्यूसली स्पेंडिंग मोर टाइम विद द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, you actually forget, your eyes actually forget to blink itself. So that's why this dryness come into your eyes and that moisture actually disappear. So all are the reasons that your eyes getting tired and you are not taking proper rest for your eyes. Next thing is hypermetropia. Hypermetropia is long sightedness. Long sightedness means you are able to see the distant object comfortably but you are not able to focus on the nearest objects. हाइपरमेट्रोपिया का जो रीज़न है वो ये है कि एज के साथ साथ जो हमारी आइज़ की मसल्स हैं वो इतनी वीक हो जाती हैं दैट दे आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, जिसकी वजह से यू कैन एक्सपीरियंस लॉन्ग साइटेडनेस. सम ओल्ड एज पीपल फाउंड देमसेल्व्स इन टू द कंडीशन वेयर दे कैन फाउंड डिफिकल्टी टू सी द नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. दैट्स वाई दे रिक्वायर बाईफोकल लेंस इन देयर स्पेक्स. तो आपने कई बार देखा होगा कुछ ओल्ड एज पीपल में जिनके पास एक ऐसा स्पेक्स होता है जिसमें जो ऊपर का लेंस होता है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होता है एंड जो नीचे का लेंस होता है वो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होता है. हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस इज़ द कंडीशन ऑफ एज, बट
myopia or short-sightedness is something which is related to the lifestyle disorder. Earlier it used to believe that there is no cure for this eyes disorder, but yoga has proved it, that there is so many ways and so many exercises in yoga through which you can actually cure this disease and you can actually normalize the function of your eyes. So with these basic asanas of eyes, you should take care of other things also. Number one, your physical exercise. All of your forward bending asanas like your Paschimottanasana, your wide leg forward bend, your Janushirshasana, your Padhasthasana, जितने भी आपके forward bending asanas हैं, प्लस जो भी आपके inverted asanas हैं like your shoulder stand, विपरीत करणी आसना, your सर्वांग आसना and your head stand, शीर्षासना, ये सब आसना और ये सब एक्सरसाइजेज एक ब्लड फ्लो प्रोवाइड करते हैं आपके अपर एरिया में, आपके फेशियल रीजन में और आपके हेड रीजन में, जिनकी वजह से जो मसल्स होती हैं उनमें एक प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है एंड योर मसल्स एक्चुअली गेटिंग स्ट्रेंथन एंड योर ऑर्गन्स ऑल्सो गेटिंग स्ट्रेंथन. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर डाइट. सो यू शुड कंज्यूम विटामिन ए एंड विटामिन बी, जो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और किसी भी फ्रूट्स में मिल जाएगा. Another thing is your milk consumption. There is an essential amino acid जो आपको सिर्फ मिल्क में ही मिलेगा, तो there should be a milk consumption. Another thing is vitamin C. Vitamin C should be consumed. You can find vitamin C in any fruits, any citrus fruits like oranges, grapes, lemon. You should consume all of these things in your diet. Take care of your diet and do not eat packaged food, do not eat processed food, and your diet should be simple, light and natural. Take care of all of these things in your routine, and now we will start with the asanas for eyes. Sit with your back straight, join your palms and start rubbing your palms together until they become warm. Place the palms gently over the eyelids without any pressure. Feel the warmth and energy transmitted from the hands into the eyes. Breathe deeply and slowly. Keep your eyes closed. Slowly lower your hands down. Sit with eyes open and start blinking your eyes for 10 to 20 times quickly. Close the eyes and relax. Take a deep breath. Repeat this practice for 5 times. Raise your right arm in front of you with the thumb pointing upward. Keep your head straight. Now, without moving your head, slowly focus on the thumb point and move your hand towards right side. Keep focus on the tip of your thumb. Stay there for few seconds and slowly come back to the center. Again, move your eyes with the focus on the thumb point towards right side and again take it back to the center. Slowly relax. Repeat the practice with the another hand. Take your left hand in front of you and slowly move to the left side without moving your head. Keep focus on the tip of your thumb. Keep moving your eyes with the focus on the tip of your thumb. Do not move your head. Take your right hand in front of you with the thumb pointing upward. Start moving your hand in upward direction and downward direction while keeping your focus on the tip of your thumb. Without moving your head, follow the movement of the hand in upward direction and downward direction and keep moving your eyes upward and downward.
Keep your focus on the tip of the thumb and follow the movement. Repeat the same practice with the other hand. Bring your hand in front of you with the thumb pointing upward. Now start moving your hand in a circular motion while keeping your focus on the tip of the thumb. Without moving your head, follow the movement of your hand with your eyes. Keep moving your eyes without moving your head. Follow the breathing instruction given in every exercise. Repeat the same practice with other hand. Keep your hand in front of you with the thumb pointing upward. Keep focus on the tip of the thumb. Without moving your head, follow the circular motion of your hand with your eyes. Slowly relax. You can do palming if you are feeling strain in your eyes. Bring your right hand in front of you with the index finger facing towards you. Now slowly inhale and bring your index finger close to your nose tip. Keep focus on the tip of the index finger. Normal breathing. Stay focused on your nose tip, on your index finger tip. Now slowly exhale and again keep your hand straight. Inhale, keep your index finger on your nose tip. Focus on the tip of your nose or on the tip of your index finger. Slowly relax and do palming. Close your eyes and relax your eyes muscles. Certain vitamins are important for good vision. Include vitamin A and vitamin B2 in your diet, found in fruits and vegetables like carrots, apricots, and green leafy vegetables. Milk should be consumed regularly as it contains essential amino acid, tryptophan, which only found in milk. Vitamin C should be consumed on daily basis. It can be found in fresh fruits and vegetables. Follow a session of yoga asanas daily, including Surya Namaskara, forward bending asanas, and inverted asanas. Wash your eyes with fresh cold water around 4 to 5 times in a day. Perform these asanas for eyes on daily basis for 5 to 10 minutes. Meditate daily for 10 minutes with the focus on eyebrow center. Avoid spending more time with the screen, especially before bedtime. Thank you for watching, friends. Hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit the like button. Please subscribe to my channel Pinaki Yoga. Hit the bell icon for further updates. Share this video to your friends and family. I'll meet you soon next week, next video. Till then, take care, stay fit, stay healthy.